So, first of all, we need to know what are economic activities. So, in simple words, economic activity can be defined as any activity which is done to earn livelihood. And when we say livelihood, we means the the money which a person gathers to arrange food, to arrange clothing, and to arrange shelter. So, activities performed to earn a living or a livelihood, and that includes food, clothing, and shelter. And after that comes the luxuries. Food, clothing, and shelter are considered as human necessities, इंसानी ज़रूरियात. तो इन ज़रूरियात के लिए इंसान जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जो आम लफ्ज़ों में हम उसे जॉब भी कहते हैं. सो these activities are economic activities. There are various definitions given by various, we can say, philosophers or thinkers. One definition says it as the activities which are, excuse me, related to the production, consumption, and exchange of things are called economic activities. So, this is one definition given by um, some of the geographers. So, initially, when human beings were sent to this earth, they were not civilized at that time, and that was the time which was called as the Stone Age, where people used to live uh, in caves. So those caves actually served as shelters, and they used to wear um, the animal skin and leaves of different plants and trees. And for food, they used to gather, means picking up the food, जो भी फल या फूड जो उनको दरख्तों से गिरे हुए मिलते थे या दरख्तों से तोड़ कर वो खाते थे, दैट एक्टिविटी वाज कॉल्ड एज गैदरिंग एक्टिविटी. और इसके अलावा फिर थोड़ा और इंसानों को अक्ल आना शुरू हुई तो दे स्टार्टेड डूइंग हंटिंग. सो ये इंसानों की सबसे पहली एक्टिविटी थी. इकोनॉमिक एक्टिविटी उस ज़माने में वी कैन नॉट से दैट बिकॉज now we are in a modern age, and when we say economic activity, it involves earning of money and, yeah, involvement of money. But अगर सिमिलर एस्पेक्ट से देखा जाए तो उस दौर के अंदर, स्टोन एज में, इंसानों का हंट करना, गैदर करना और मौसम के हिसाब से अपना शेल्टर चेंज करना, वो एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काउंट की जा सकती हैं. Then, when humans started making weapons for different purposes, for hunting purpose mainly, and then for digging the earth, so that was the time which was given as the name of the Bronze Age. So, Stone Age के अंदर humans used to have gathering, खाने की चीज़ें उठा के यूज़ करना, and then, yeah, simple
hunting, we can say, and followed by the Bronze Age, where people started hunting and taming of animals, wild animals especially. So that was the Bronze Age, Bronze Age, wild animals. Um, Using handmade tools, followed by the machine age. This was the age when the steam engine was invented, and different sort of machines are used, which has changed the whole scope of economic activities. Then after machine age, this is the age which is called as the atomic age, where micro processors and and chips are introduced, and there are many technological advancements. सो ये टाइम पीरियड हैं, ये दौर हैं जिनसे इंसान गुज़र के आज की दुनिया में पहुंचा है 21वीं सदी में, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हंटिंग और गैदरिंग से अब जाके टोटली चेंज हो चुकी है. एंड नाउ थिंग्स हैव बिकम मोर एडवांस्ड. तो अकॉर्डिंग टू दैट अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज किया गया, and some people say that there are three categories of economic activities, while others say that there are five types of economic activities. But जो बात दोनों में कॉमन है वो ये है कि those five categories are the real categories of economic activities. So let's see what those types of economic activities are. First type of activity is the primary activity, followed by secondary activities, then tertiary activities. So these three types are agreed upon by every human geographer or every economic geographer. टेमिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करना, कंट्रोल करके अपने बस में लाना. सो दैट इज़ टेमिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. क्योंकि दुनिया में जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, तो हर सोसाइटीज़ के अंदर इंसान जैसे हम अगर अपने इन्वायरमेंट में देखें तो हमारा सिर्फ लाइक वी सी काउज एंड बफेलोज एंड गोट्स, तो ये इतने वाइल्ड एनिमल्स नहीं हैं. लेकिन दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में दे यूज़ अदर एनिमल्स. तो वो एनिमल्स डोमेस्टिक उस वक्त डोमेस्टिकेटेड नहीं थे, बल्कि उस वक्त वो वाइल्ड में रहते थे. आई मीन जंगलात में और थोड़ा इंसानी कंट्रोल से बाहर होते थे, लाइक पिग्स एंड बोर्स, सो दोज काइंड ऑफ एनिमल्स. ओके, सो ये तीन एक्टिविटीज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सब सारे इकोनॉमिक जोग्राफर्स या इकोनॉमिस्ट दे एग्री अपॉन दीज थ्री टाइप्स. अब जो बाकी की जो दो टाइप्स हैं उसको सम पीपल से कि वो अलग कैटेगरीज हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग पांच टाइप्स हैं, जबकि बाकी दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है इट सेज दैट द रिमेनिंग टू आर द सब टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. बस ये एक पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है. आई विल गो फॉर द school of thought which says there are five types. ठीक है, but it won't make much difference.
कुछ का कहना है कि टर्शरी की 2 सब टाइप्स हैं और कुछ कहते हैं नहीं, टोटल 5 टाइप्स हैं. So quaternary activities is the fourth category of economic activity, and then the last and the highest level of economic activities are the quaternary activities. Okay, so 5 types: primary, secondary, tertiary, quaternary, and quinary. So if we see, if we categorize these according to the main thing which is done in these types. So first one is, excuse me, primary activities are those which involve production of things, direct interaction with the nature. So this is the production category of economic activities. Then we have secondary. This is again, it's a combination of production and consumption. Let's make it simple and make it like this. Primary activity deals with production of things, while secondary activities deal with consumption, and the remaining three are, especially the tertiary one, is for the exchange of the produced items. ठीक है, तो ये डील करती है प्रोडक्शन से, कोई चीज़ बनाई जाए. ऑल दो सेकेंडरी एक्टिविटी में भी प्रोडक्शन है, बट प्राइमरी एक्टिविटी में द थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचर. नेचर से इंसान डायरेक्टली इंटरेक्ट करके प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, लाइक एग्रीकल्चर, फार्मिंग, like mining, like fishing and gathering, hunting. इसमें इंसान का इंटरेक्शन डायरेक्ट नेचर से होता है. सो दैट इज़ प्रोडक्शन. अच्छा जी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं? द थिंग्स विच आर अचीव्ड फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी जो चीज़ फार्मिंग से हासिल हुई, जो फिशिंग से हासिल हुई, जो माइनिंग से हासिल हुई, उन चीज़ों को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर यूटिलाइज करके कोई नई चीज़ बनाते हैं. सो दैट यूटिलाइजेशन इज़ एक्चुअली कंजम्पशन. दीज आर वेरी वाइड टर्म्स, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक कैटेगराइज कर रही हूँ. ऑल दो कंजम्पशन कैन बी देयर इन अदर 3 एक्टिविटीज़. ठीक है. सो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर यूटिलाइजिंग द प्रोडक्ट्स विच आर अचीव्ड फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटीज़. लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज़ में फार्मिंग हुई, कॉटन प्रोड्यूस हुआ, कॉटन को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वालों ने कन्वर्ट किया फैब्रिक में. तो व्हेन फैब्रिक इज़ मेड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, तो वो कौन सी एक्टिविटी हुई? सेकेंडरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी में हमने शुगर केन की क्रॉप्स ग्रो की, शुगर केन इज़ अचीव्ड. नाउ व्हाट सेकेंडरी एक्टिविटी विल डू? इट विल टेक दोज शुगर केन इनटू शुगर मिल्स and sugar will be produced and other products related to sugar cane. इसी तरह वीट की कल्टीवेशन हुई प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, और वीट को यूज़ किया सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वालों ने, एंड इनसाइड फ्लावर मिल्स आटे में कन्वर्ट किया, आटा बनाया. एंड फिशिंग इंडस्ट्री, फिश को कैच करके, और डिफरेंट सी फूड्स, दे आर डायरेक्टली गोइंग इनटू द नेचर, समंदर में जाके वहाँ से कैच करते हैं. और फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या है? दे हैव फैक्ट्रीज टू मेक टिन्ड फूड्स. एंड देन या प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर एक और टाइप है, दैट इज़ लम्बरिंग, कटिंग ऑफ वुड्स. सो वुड को
attain किया from directly from nature, and that wood is taken to the secondary activity factories to convert into furnitures and all. ठीक, ये हो गया प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के किस तरह चीज़ें नेचर से ली गई और उसको यूटिलाइज किया सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर. नाउ इन टर्शरी एक्टिविटीज़ दिस इज़ अबाउट एक्सचेंज, या हम इसको कह सकते हैं सर्विसेज. दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इन दोनों को असिस्ट करने वाली सर्विस या ओवरऑल ह्यूमैनिटी को असिस्ट करने वाली सर्विसेज टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं. इसको सिंपल वर्ड्स में सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, द सर्विस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड एग्जांपल्स ऑफ सर्विस आर, द बिगेस्ट एग्जांपल इज़ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए भी चाहिए, हमें सेकेंडरी के लिए भी चाहिए, but who is providing that? It's the tertiary activities which are providing the transport. इसके अलावा जब फैक्ट्रीज़ में चीज़ें बन रही हैं तो उनको कंज्यूमर्स तक, यूज़र्स तक पहुंचाने के लिए क्या एक्टिविटी होती है? दैट इज़ ट्रेड, सेल एंड परचेज. सो दो मेन कैटेगरी है टर्शरी एक्टिविटी के अंदर, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. सेल एंड परचेज, सेलिंग परचेजिंग, ये किस में है? टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर. Alright, then what are quaternary activities? Quaternary activities are high level services. High level activities, these are also called as white collar jobs. अच्छा जी, अगर हम जब कॉलर की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में दिस इज़ कॉल्ड एज रेड कॉलर जॉब. सेकेंडरी एक्टिविटी में काम करने वाले, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर जॉब्स असाइन किया जाता है. टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर दे आर गिवन डिफरेंट different colors, like pink collars and समटाइम्स ब्राउन कॉलर्स. तो ये सेक्टर पर डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर में जॉब है, उसके अकॉर्डिंग कॉलर्स असाइन किए जाते हैं. टर्शरी एक्टिविटीज़ में लाइक द फीमेल वर्कर्स आर असाइन द पिंक कॉलर्स, द ब्राउन वंस आर फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर. And then for quaternary activities, it's the white collar job. And the quinary activities are extremely high level jobs. Like there are very few people who are engaged in quinary activities. So for quinary, the collar is gold collar. Okay, let me write the collars here. Red collar jobs. Blue collar. Brown color. White collar. Followed by gold collar jobs. Okay. क्वाटरनरी एक्टिविटीज़. टर्शरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स में ट्रांसपोर्ट और ट्रेड सेक्टर मैंने आपको बताया. सो इन द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड सेक्टर वी कैन से कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो टर्शरी के अंदर शामिल हैं. सो इट इंक्लूड्स बार्बर, टेलर एंड baker, a salesman,
अ ड्राइवर, तो ये सब हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर। पैरामेडिकल स्टाफ एंड क्लर्क, सो ये सब टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर हैं। और और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, या आजकल जो एक टर्शरी एक्टिविटी आ रही है, बहुत कॉमन है, दोज आर द राइडर्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज लाइक फूड पांडा राइडर या बाइकिया सर्विस के जो राइडर्स हैं, वो भी टर्शरी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। ना क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। लाइक टीचर्स की भी कैटेगरी हैं, सम आर इन द टर्शरी सेक्टर एंड सम आर इन द quaternary sector. It depends upon the type of classes they are teaching. Like for a simple primary school, it can be tertiary, and for university level, college level, research level, it's quaternary. And quinary के अंदर जो बहुत ही हाई लेवल की जॉब्स हैं, लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, the CEO of any group of companies, and then scientist, high level scientists like Bill Gates, or we can say recently Stephen Hawking's was a scientist. So ये culinary activities के अंदर ये लोग शामिल हैं। एंड या एक और there's another person, मार्क जकरबर्ग। सो इनकी एक्टिविटीज़ culinary activities के अंदर काउंट होती हैं। इलॉन मस्क, ये हैं culinary activities, एक्सट्रीमली हाई लेवल एंड हाई लेवल ऑफ सर्विसेज। और साइंटिस्ट, जो हाई लेवल के साइंटिस्ट हैं, वो भी क्विनरी के अंदर। और जो एक नॉर्मल रिसर्चर होगा, दैट विल बी इन क्वार्टनरी, कुछ नया बनाने वाले क्विनरी के अंदर। सो ये ब्रीफ ओवरव्यू था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। एंड या सो okay, so let's do some primary activities examples. It's directly direct interaction with nature and it involves farming, agriculture, mining, hunting, gathering, lumbering. Along with mining, there is a term which is called as quarrying. All right. So these are the primary activities. Now for secondary activities, involves the conversion of raw material into products. Industries are included, and the process of industry involves three things: raw material, process,
and then product. So these are the three things involved in an industries. So then manufacturing, processing, construction, power production. These are all examples. Then some some types of industries are textile, pharmaceutical industries, and sugar mills, flour mills. And you say it, you have it. There are a lot. Okay, so the third one, tertiary activities. Tertiary activities, service sector, trade, transport, personal and professional services, barber, tailor, cobbler, nurse, driver, rider, and there are many. Quaternary. Quaternary activities, high level services. Okay, there is one thing I have to add there. Here, trade. The trade is of two types, retail and wholesale. Retails are the normal shops in the neighborhood, while wholesales are the bulk selling of different items. Quaternary activities, high level of services, bankers, senior bankers, of course, managers, lecturers, professors, and we can say owners of companies, smaller companies. And industries. So this is quaternary, and then we have quinary service, quinary activities, the apex level of services, high profile scientist,
ओके, वैसे जितनी देर में मैं टाइप कर रही हूँ तो इट वुड बी इनफ टाइम, बट ओके, आई एम नाउ स्टेइंग हियर इन दिस स्लाइड ताकि आप कॉपी कर लें। ठीक है, दिस इज़ द क्वाटरनरी एक्टिविटी स्लाइड एंड या यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट, या आई थिंक जितनी देर मुझे टाइप करने में लगता है आप उसी टाइम को यूटिलाइज करें। Okay, so if I think you have done it, we are running short of time, so let's move on to the next. Right. High profile scientists, CEOs of the companies, business tycoons, presidents, prime ministers. Yeah, so these are the examples of the quaternary activities, and now we will discuss these activities in detail in the upcoming lectures.